we will see DTO. Okay, DTO means data transfer object. Okay, it is a simple Java class used to transfer data between different layers of an application without exposing the internal entity structure. Okay, हम जब भी फुल एंटिटी डेटा को एज अ रेस्पॉन्स नहीं भेजना चाहते हैं, ओके, सम ऑफ द फील्ड्स ही एज अ रेस्पॉन्स भेजना चाहते हैं, ओके, एज अ रिक्वेस्ट भी हम एंटिटी का फुल ऑब्जेक्ट को हम एक्सपोज नहीं करना चाहते, तब हम DTO यूज़ करते हैं. ओके, एंड why we use the DTO? Okay, it will improve the security. Okay, prevents exposing sensitive fields like in the entity class we may have password field, okay, internal IDs. So if we don't want to expose those fields, we can use the DTO. Okay, it will improve the performance. Okay, it will send only required fields to the client so that it will improve the performance. Okay, and validation. Okay, we can apply the validations at the DTO level only. Okay, no need to add the validation at the entity class. Okay, first we will create a DTO package and we will create two classes. One is for the request DTO and another is response DTO. Okay, request DTO का यूज़ क्या है? जब भी हम डेटा को सेव करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं, ओके, एज अ रिक्वेस्ट हम ऑब्जेक्ट पास करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम रिक्वेस्ट DTO यूज़ करेंगे. ओके, रिक्वेस्ट DTO क्लास का ऑब्जेक्ट. एंड रेस्पॉन्स DTO, जब भी हम रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद हम एज अ रेस्पॉन्स कुछ फील्ड्स, ओके, कुछ डेटा रिटर्न करना चाहते हैं क्लाइंट को, उसके लिए हम रेस्पॉन्स DTO क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. उसके अंदर फील्ड्स मेंशन करेंगे जो भी हमको एज अ रिटर्न करना है रेस्पॉन्स. ओके, we will create a mapper package. Okay, one mapper package, and we will convert those request DTO to entity. Okay, because repository के अंदर सेव, अपडेट, रिट्रीव, डिलीट जो भी करता है वो एंटिटी क्लास का जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको लेके करता है. ओके, बट हम रिक्वेस्ट क्या भेज रहे हैं? रिक्वेस्ट DTO ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं. रिक्वेस्ट DTO ऑब्जेक्ट के ऊपर तो काम नहीं करता है रेपोजिटरी. सो इस रिक्वेस्ट DTO ऑब्जेक्ट को एंटिटी के अंदर कन्वर्ट करेंगे. ओके, देन वी परफॉर्म द CRUD ऑपरेशन. एंड जब भी हम रेस्पॉन्स भेजना चाहते हैं, ओके, क्लाइंट को, आफ्टर प्रोसेस द डेटा, we don't want to expose the entity fields, right? So we will convert the entity fields data into the response DTO class object. Then we can return the response DTO object. Okay, होता क्या है देखेंगे. Okay, okay, consider this is the user entity. Okay, this is a user class. Okay, we can say this is a entity class. Okay, which have the fields? Okay, for example, there is ID field, okay, and name field, okay, and email field, okay, and address field, and about field, okay, and phone number field, okay, and password field. Okay, there may be many fields in the user entity class. Okay, I don't want to expose this field. Okay, so whenever consider the scenario, okay, to save the data into the database. Okay, at that time हम इस डेटा को सेव करना चाहते हैं तो क्या होगा?
ये सारे फील्ड्स का डेटा जो है वो एज अ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हम जेसन ऑब्जेक्ट से मतलब क्लाइंट से हम रिक्वेस्ट करते थे। ओके, वो रिक्वेस्ट किधर आता था? कंट्रोलर के पास। ओके, you can consider this as a client, this is a controller, this is the service, and this is the repository. Okay, repository will interact with the database. Okay, this is a client. Okay, this may be a postman or a browser, and that client will request to the controller. Okay, and the controller will interact with the service layer. Okay, the service layer will interact with the repository layer. Okay, and the repository will interact with the database. Okay, DB. Okay, करेक्ट। तो हम अब क्या करते थे? यूज़र एंटिटी का ऑब्जेक्ट क्लाइंट जब पास करता था, ओके, कंट्रोलर के पास आता था, कंट्रोलर वो ऑब्जेक्ट को सर्विस के पास करता था, सर्विस से रेपोजिटरी, रेपोजिटरी डेटाबेस के अंदर सेव कर देता था। करेक्ट। तो जब हम DTO क्लास DTO क्लासेस यूज़ करेंगे तब हम क्या करेंगे? हम इसको कंसिडर करो। ओके, यूज़र रिक्वेस्ट DTO। ओके, यूज़र रिक्वेस्ट DTO। ओके, इसके अंदर हम फील्ड मेंशन करेंगे। ओके, ओके, तो इधर हम क्या करेंगे? आईडी ऑटो जनरेट करेंगे। सो नो नीड टू क्रिएट द आईडी। ओके, हम इस यूज़र रिक्वेस्ट DTO ऑब्जेक्ट को पास करेंगे। ओके, instead of entity class. Okay, and that will come to the controller. Controller will send that object to the service. Okay, service, in the service, okay, it will call the repository layer. Okay, but the repository layer, okay, it responsible to interact with the database, but repository layer एंटिटी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ही काम करता है। तो उसको हम क्या करेंगे? इस यूज़र रिक्वेस्ट DTO को हम क्या करना चाहिए तब? क्योंकि ये रेपोजिटरी लेयर जो है वो एंटिटी फील्ड्स के ऊपर ही काम करता है, तो इस यूज़र रिक्वेस्ट DTO को हमको कन्वर्ट करना चाहिए एंटिटी क्लास का ऑब्जेक्ट में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे यूज़र का। करेक्ट। बाद में इसके अंदर हम क्या करेंगे? यूज़र डॉट सेट नेम। ओके, ओके, ऑलरेडी DTO का ऑब्जेक्ट इस सर्विस के पास ISO रहेगा। ओके, DTO, ओके, उसका रेफरेंस वेरिएबल है, समझो DTO डॉट गेट नेम। करेक्ट। तो वैसे ही हम हर एक फील्ड को सेट करेंगे। यूज़र डॉट सेट ईमेल। ओके, DTO डॉट गेट email. Okay, user dot set address, DTO dot get address.
user dot set about DTO dot get about, करेक्ट। हम सारे फील्ड्स को क्या करेंगे, सेट करेंगे इस यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर। ओके, यूजर डॉट सेट फोन नंबर, DTO डॉट गेट फोन नंबर, करेक्ट। यूजर डॉट सेट पासवर्ड, ओके, DTO डॉट गेट पासवर्ड। ओके, तो ये सारे क्या रहेगा, कैपिटल रहेंगे। ओके, करेक्ट। गेट नेम, गेट email, get address, get about, get phone number, ओके, get password। ओके, इस यूज़र के अंदर सेट करने के बाद तब हम क्या करेंगे, रेपोजिटरी के अंदर, ओके, रेपोजिटरी का जो सेव मेथड है उसके अंदर हम पास करेंगे इस यूज़र ऑब्जेक्ट को। ओके, तब रेपोजिटरी क्या करेगा, इस यूज़र ऑब्जेक्ट को डेटाबेस के अंदर सेव करेगा। ओके, अभी कोड को देखते हैं। ओके, I have created the package of DTO, okay, and created the package of Mapper. Okay, I have already created the Spring Boot application for the user to save the data. Okay, DTO के अंदर entity class को देखते हैं फर्स्ट, क्या क्या fields है। ओके, entity class के अंदर है field ID, name, email, password। मैंने 4 ही fields लिया है अभी। ओके, इसके अंदर मैंने ऐड किया गेटर, सेटर्स एंड रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर। ओके, मैंने DTO के अंदर सेव करने के लिए एज अ रिक्वेस्ट, यूज़र रिक्वेस्ट DTO क्लास बनाया है। इसके अंदर गेटर्स, सेटर्स एंड रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर मैंने ऐड किया है। ओके, हमने फील्ड लिया नेम, ईमेल, ओके, पासवर्ड। ओके, and the third point I have added in that file is that text file is we can add the validation at the DTO class only. So I have added the validation here. Okay, at the rate not blank and at the rate email and at the rate not blank. Okay, okay, this is the user controller class. Okay, for the post mapping, okay, you can able to see I am sending a request of user request DTO class object, not a entity class object. Okay, entity class name is user. Okay, I am not passing that. Instead of that, I am passing user request DTO class object. Okay, I have created a reference variable of a user service. Okay, I will call the create user method from the service layer. Okay, I am passing the DTO class object to this create user method. Okay, see, this is the user service class. Here I have created the create user. Okay, the request DTO class object is coming to here as a parameter. Okay, here I have shown you. Okay, in the service layer we will convert the request DTO class object into a entity class. Okay, so
वी नीड टू यूज द ड्राइव प्रिंसिपल मीन्स अगर मैंने इधर भी वही लॉजिक लिखा, ओके, अगर अपडेट करने के बाद भी वही लॉजिक चाहिए कि हमको डीटीओ क्लास का ऑब्जेक्ट से हमको एंटिटी क्लास का ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाहिए, ओके, सो कोड रिपीट हो जाएगा। उसके बदले में मैंने क्या किया, एक यूज़र मैपर बोल के एक क्लास क्रिएट किया, ओके, उसके अंदर वो मेथड लिखा है कि हम जब भी इस मेथड को, ओके, पब्लिक यूजर इज अ रिटर्न टाइप, टू एंटिटी इज अ मेथड नेम, ओके, यूजर रिक्वेस्ट डीटीओ का ऑब्जेक्ट मैंने पास किया तो इधर क्या करेंगे, वही सेम लॉजिक जो मैंने लिखा था कि यूजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके अंदर जो भी फील्ड्स हमको रिक्वायर्ड है उसको सेट करेंगे, ओके। तो यूज़र रिक्वेस्ट डीटीओ का अंदर कौन सा फील्ड्स है, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, ओके। तो इसके अंदर मैंने यूज़र को ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, ओके, एंड आई एम सेटिंग द नेम, ईमेल, password and getting these name, email, password from the DTO, okay, and I will return the user object as a return type, okay. You have to create the class with the user mapper, okay, and you have to make that class with the component, okay. If we will mark the class with the component, okay, it will become component of a Spring Boot application, okay. The bean of this class will be managed by the Spring IOC, okay. So these methods, okay, these two entity methods and two DTO methods, these are the non-static methods. So we need to call this by using reference variable. So I have auto add the user mapper class here, okay. I will call the method to entity, okay. I want to perform the operations, CRUD operations on a entity class only, right? So I want to convert this DTO class object into the entity. So the entity, to convert the DTO into entity class, okay, the method will be present in a user mapper class, okay. So I am calling this method, okay. To call this method I want a reference variable user mapper dot to entity. Here I am passing this DTO object, okay. What it will return, it will return a entity class object, right? See here, it will return an entity class object where we have set the fields. So I have saved in a reference variable with the name entity, okay. No need to save also, okay. I want to save in the database. So to perform the database operations, the methods are present in a repository layer, okay. So I am calling this save method from the repository, that is user repo, and I am passing this entity class object to this save method, correct? Let me run this application. Okay, it is running on port 8081. Let me open the Postman. Okay, see 8081 and the endpoint is save, okay. The request type is post and body raw JSON. I want to send a request as a JSON object, okay. These are the fields which is present in a request DTO, name, email and password. I have passed the values, okay. I will send, okay. The status is okay, 200, okay, means the data has saved to the database. Let me open the database, okay, tables. See, you can able to see the ID will be auto generated, okay, and email, name, password have saved to the database, okay.